Hello guys, I hope you are all are doing great. So my today's topic is legal method part 1. Now let's come towards the rule of law, in which let's come to the meaning of rule of law, which basically derive from the Latin word which is law principle they legalize. बेसिकली इसका मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट होती है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के ऊपर पूरी बेस्ड होती है. एडवर्ड कॉक इज द ओरिजिनेटर ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड अकॉर्डिंग टू हिम द किंग इज नॉट अबव द लॉ. एंड बेसिकली जो रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है वो लाया गया है एवी डाइसी के द्वारा. एंड एज फॉर द प्रोफेसर एवी डाइसी, तो उन्होंने ये बोला है कि रूल ऑफ लॉ है वो एब्सोल्यूट सुपरमेसी है और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ है. तो जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई भी इंसान की गलती नहीं है, अगर उसने कोई भी वॉइड हरकत नहीं करी है लॉ के सामने, तो पनिशेबल नहीं होगा. एंड ऑन अ सेकेंड हैंड हमने एक चीज़ पढ़ी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो कोई भी इंसान जो है अबव द लॉ नहीं है. हर एक इंसान के लॉज इक्वल है. हर एक इंसान को लॉ की सारी बातें माननी पड़ेगी. सारे आर्टिकल सब कुछ हर एक इंसान पे एप्लीकेबल है. कोई भी डिफरेंस नहीं है लोगों के अंदर. Three principles of ROL is supremacy of law, equality before law, and predominance of legal. Rule of law in modern society. The first point is dignity of man as individual. Second, government capable of maintaining law and order. Third is independent judiciary and free legal profession. Now, rule of law in India. Preamble. Justice, liberty and equality provide करता है. Constitution is supreme. All three organs of government, that is legislature, judiciary and executive, are bound by the ये तीनों की तीनों बॉडीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड होती है. थर्ड इज इक्वालिटी फॉर लॉ विच इज आर्टिकल 40, जिसका मतलब ये होता है कि हर एक इंसान को एक इक्वल दर्जा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ वन इज द फंडामेंटल राइट्स विच आर गिवन इन द पार्ट 3. सो फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 जो है पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो पूरा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें. नाउ फिफ्थ वन इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें कि आर्टिकल 32 आता है विच इज सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 226 इज अबाउट. ये जो आर्टिकल्स है ये बताते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट किसके अकॉर्डिंग कैसा हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, हेबियस कॉर्पस केस. सो बेसिकली मैं इस केस के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगी, बट this case highlighted the loopholes of our constitution which were used by the union government to abuse fundamental rights in desperate times. If you really want, I will make a video on this case. Now let's go towards the Keshvanand Bharti versus State of Kerela. And in this case, the court held 24th constitutional amendment was entirely valid. 25th constitutional amendment held to be improvised. Now comes towards the Indira Gandhi Nehru versus Narain. तो इसमें खुद ही मैंने लिख दिया है कि immunization of election of prime ministers from scope of judicial review is in violation of basic structure doctrine. एंड बेसिकली केस में यही हुआ था, जो इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उन्हें जो है गिल्टी प्रूव कर दिया गया था ड्यू टू वेरियस इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस. प्लीज कमेंट इफ यू वांट कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ इन केस का उस पे. सो वन नेक्स्ट केस है शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. बेसिकली इसमें ये गाइडलाइन दी गई थी जो भी हमारी फीमेल प्रिजनर्स होती हैं उनको भी एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए. एंड शीला बारसे जो है एक जर्नलिस्ट थी जिसने काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को देखा, प्रिजनर्स में जाके देखा कि वुमेन्स को कैसे ट्रीट करते हैं. उसके बाद उन्होंने एक रिपिटेशन फाइल करी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फीमेल प्रिजनर्स को भी हक है कि उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए, स्पेशली इन मुंबई. एंड आवर नेक्स्ट केस इज वीना सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये बोला गया था एक्सटेंडिंग द रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ टू पुअर एंड डाउन ट्रॉडन. नाउ लेट्स कम टू द सेपरेशन विच इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव. तो बेसिकली इसमें यही बोला गया जब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी होती है वो एक फ्री डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, जिन्हें की सेपरेट रखना चाहिए, और वो जो एक्सरसाइज होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो है होनी चाहिए. एंड बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है डिवीजन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इनटू ब्रांचेस एंड ईच विद सेपरेट पावर्स, independent responsibility,
तो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है मॉन्टेस्क्यू ने निकाला था इन 1748 अपनी बुक्स में स्पिरिट डिसलूज द स्पिरिट ऑफ द। उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक इंसान जो है सारी थ्री फंक्शंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, विच इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, and the doctrine seek to prevent concentration of the power by providing checks and balances. Montesquieu found that if the power is concentrated in a single person or a group of people, then it results in a tyrannical form of government. As per Montesquieu, liberty cannot be protected unless and until there is a separation of powers. Now let's come towards the suggestion given by the Montesquieu. So according to him, there should be clear separation of power between the three organs, which is legislative, executive, and the judiciary. And he also said that when the executive and legislature power is united in the same person or in the same body of the magistrate, there can be no liberty if the judicial power is not separate. The same person should not compose more than one of the three organs of the government. For example, the minister should not sit in the parliament. Now let's come to the separation of power. All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States. Article 2. The executive power shall be vested in the President of the United States of America. Article 3. The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court or in such inferior court. Now, in Article 50, separation of judiciary from executive, the state shall take steps to separate the judiciary form of executive in the public service of this. So in simple language इसका मतलब यही है कि जो स्टेट है उसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से जो अलग कर दिया जाए. थैंक यू.